got to define our goals very clearly in life. I came from a medical family and I really didn't know what I was going to aspire for. And one of the thoughts was getting into business. Now, business is so big that really the aspiration was only a goal called business. It was only after we struggled to find out various things that I could put the compass in the right direction and say I wanted to choose A, B, or C, which became textiles and real estate. And we moved towards that. But unless you don't have a fixation in your mind, no matter how unclear your goal looks at the first period, it's extremely important to start moving in it. In this age and time, we think we don't need to put a goal. We don't need to put a destination. And I find that that is the biggest fault that I have seen in people who actually don't make it to break that glass ceiling. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे हैं? Sir, first of all, I'm thankful to you on behalf of A-Star Advisors for sparing your valuable time and inspiring today's professional by sharing your illustrious professional journey. My pleasure to definitely be with you today. And of course, it's been a first generation business person, started by teaching us in the Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants for being a teacher, got into textiles, got into real estate, gave up textiles, forayed straight away into the real estate field, didn't have anything. Over a period of time, got into education on the not-for-profit, got into hospitals, not-for-profit, got into skilling, not-for-profit, worked on policy issues, worked with the Maharashtra Chamber of Housing Industry, worked with Indian Merchants Chamber, ASSOCHAM, NAREDCO, worked on the first national housing policy during Vajpayeeji's time, worked on the slum policy with Mr. Balasaheb Thackeray. I was a co-signator on the policy. And so many other things have gone on. Amazing, sir. So you have already answered second of my question, which is coming from a family of doctors. What motivated you to pursue CA? And after completing your CA for a while, you taught in CA Institute and then moved to textile manufacturing and finally landed as a real estate mogul. So can you share a little bit about your professional journey and key takeaways? So the question left is key takeaways and what motivated you to join the CA? Well, I came from a doctor's family. My father, my brother, my sister-in-law, all were doctors. Before me, there was nobody in the business of business. But I looked up to the idea of business and I always believed that I should get into it. But coming from a professional family, I was very handicapped because ultimately the professionals think differently in terms of the risk-taking appetite. So there was a huge difference between a professional outlook to things and a real estate developer's outlook to projects. So I think that was the major leap that I had to do in terms of what work we are doing. As far as the other aspects were concerned, I think we learned over a period of time the domain knowledge in each field and then got into different types of projects, including doing townships. Built the first township in India of the size and scale that we did. Quality in terms of it, infrastructure, creating a holistic township, which meant schools, colleges, hospitals, retail, IT, commercial, all these aspects of it, made gardens. 25% of the projects are gardens. So 30, 40, 50 acres, did recycling plants, recycled 100% of the water that comes out of the projects. And this was done 35 years ago, before recycling was really a fashion or a requirement in terms of the environmental clearance laws. So we did a lot of these aspects of it differently. So it was possible for me to create a policy. I was able to get into projects where there were no good examples in India of the type of townships that I created. And but I always dreamt that India should have what it is. And fortunately, I was able to make these dreams into action into reality, and you have it here. And after doing one project in Powai, we did the second one in Thane.
also successful. We are now on a third one in Panvel. We have done in Chennai. So various multiple projects have come to be. All took long processes and times because policies for townships were not very clear in those days. Money was not easily available in the sense that banks didn't give much to developers. Also the fact that there were lots of other issues. Even individuals got home loans at very high rates of interest. HDFC rate of interest 25 years ago was 17%, 16 to 17%. And so lots of things was an uphill task in those days and times. But nevertheless, we were able to overcome that and be where we are today. That is the reason you are now favorite of our honorable CM of UP also, and he's invited you for Investor Summit. Yes. We did, my son has built a data center over there, and probably the first in UP and one of the largest in the world. So it's been one of the very big examples of good work that was done thanks to UP government's proactiveness in terms of activity. We were able to do it in record time. Yes. Congratulations, sir. Thank you. My third question is, Hiranandani Group being one of the India's most influential real estate brands, having trust of thousands of families who are owners in your property. What is the secret that people trust the projects you undertake? Well, I think we are customer centric, and we do believe that all the stakeholders should be given equal importance. So whether it's the landowner from whom we purchased, or it is the customer whom we are committing to, or it's the contractors who have been working with since so many years, suppliers, dealers, intermediates like channel partners and others, all would be happy to deal with us because we would be transparent, we would have honesty in terms of it. The second part of it is the fact that we would believe that the quality of the infrastructure, the quality of the buildings should be second to none. So all our buildings, all our things are very good quality, the highest that you can think of. And people appreciate the kind of products that we have created, and people are very happy. And the third is that we have created value for money. So something which we sold at the beginning of the project in Powai for 1,000 rupees a foot is now being resold after 30 years at 42,000 rupees a foot. So people have made a lot of money out of investing in the whole thing. We have created a lifestyle which is different. A lot of Bollywood movies have been shot in our township, so you can see it on so many of the films that are done and we do believe that giving back to the community is very important. So these are methods by which we run our business, but at the same time, it's giving back to society, and the people and all our stakeholders are a part of an extended Hiranandani family. And I remember one of your Sitkul project, which you have mentioned in some of your interviews, that many landowners have returned the money to the buyers, but you are the only one who have completed the project. Even then, it's a loss. Yeah, so we had bought in many years ago, maybe 25 years ago from Sitco. We had bought a plot and we had sold the plots, and about 10 other developers bought it. They were sold it and they were making losses. They were able to return back the plots. We completed the project, made a loss, but we delivered the goods to the customers. So I think, all this is part of our commitment to all the partners, stakeholders that work with us, and that creates the brand or the goodwill that is associated with when we come into the picture. Correct. So my fourth question is, leadership is managing the things in the right way and also handling situations with calmness when things goes wrong or not in favor. What are the leadership quality one must have to become a successful entrepreneur, or rather I would say what a person should do so he can become like you? Very, very difficult question. It's not easy to say what leadership is meaning to be. What we can say is that what we bring to the front, we maintain our commitment. We believe in walking the talk. We believe that circumstances will change, but our commitments will not.
We do believe that we must keep on upskilling, training, upgrading our projects and products, whatever it is there for. We must have a human approach to people, because after all, ultimately, all the people are human. And many times the letters of the agreement or the law may be tough, but in reality, we have much more human relationships in terms with the. We believe that all the stakeholders, as I've said earlier, are part of an extended family. So we work together. Of course, we have differences. There are problems, and differences are bound to take place. But we sit across the table and we sort them out, and we try to be fair. So we have long-term relationships with everybody. So whether it's our customers are our repeat buyers, or their references come to us. Maybe 30% of our current projects, residential, is sold through the references of people who are already dealt with us. And that is important. Our banks, which we are dealing with from 30 years, we keep on dealing with them. We take money, we return it back. All those things happen and still go on. So basically, the leadership quality is more in the sense of being fair, just, and proper, and ethical. And I think if you have the humanity in you, all these things happen. Of course, we have to be particular when some of our stakeholders try to do wrong things. Like, for instance, if they don't produce proper quality of goods, we are very tough on those people who are our core stakeholders. But having said that, we work quite fairly with most of them. So it's a win-win situation with all our core stakeholders. My second question is, अगर आपकी तरह बनना हो तो क्या करना चाहिए? आपकी तरह बनना नहीं है, मुझसे भी कैसे बेहतरीन बनना वो सीखना चाहिए. मैं तो हमेशा हर एक अच्छे लोगों से सीखता हूँ. उस दिन एक हफ्ते पहले मैं रतन टाटा जी से मिला था, तो उनसे बातचीत कर रहा था, तो वो एथिकल वैल्यूज की बात की. दूसरे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं उनसे भी सीखता हूँ कि भाई वो कैसे काम करते हैं. हम विलायत जाते हैं तो जहाँ टाउनशिप बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, दुबई में, सिंगापुर में, चाइना में कैसे बनाते हैं, उनसे सीखता हूँ. तो वन थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न ऑल द टाइम. हम ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि आज की तारीख में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आता है अपने को शिक्षा देते. तो ये सब देखते हुए ये समझना चाहिए कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें. हम उसको 1% भी हम इम्प्रूवमेंट करें, वो भी बेहतरीन बात है. हम खुद इम्प्रूवमेंट करें, दूसरे से टकराव करने की कोई आवश्यकता नहीं. हम यही सोचे कि मैं कैसे इम्प्रूव करता हूँ, दूसरे की मेंटरशिप से हम कैसे उससे सीख सकते हैं. छोटे लोगों से भी सीखना है, बड़े लोगों से भी सीखना है, हर एक से सीखना है. तो ये मैं समझता हूँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है. जब तक आप सीखते रहेंगे, आप नीचे नहीं जा सकते, हमेशा ऊपर ही जाएंगे. Learning is a continuous process. Absolutely. Okay, great. So my next question is, from December 22nd, the baton of presidency of G20 has been handed over to India. How do you think India will benefit from this, and how can we, being world's largest democracy and one of the fastest growing economy, can contribute to the world as a whole? नरेंद्र मोदी जी ने हमको सिखा दिया है कि लीडरशिप कैसे किया जाए. आज की तारीख में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक अलग अलग दिशा में देख रहे हैं और जा रहे हैं. हम समझते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में मोदी जी ने दोनों को बैलेंस कर दिया है. अभी इंडिया सेंट्रिक हम पॉलिसी कर रहे हैं. इंडिया सेंट्रिक कैसे कर रहे हैं? हम वेस्टर्न कंट्रीज से भी डील करते हैं, आईटी में भी करते हैं, मटेरियल्स में भी करते हैं, शिक्षा में भी करते हैं. और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, तो उसमें रशिया से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल हम खरीदते हैं. हम अगले 6 महीने के अंदर लगभग 35,000 करोड़ रुपया हमने बचाए हैं. We have saved 35,000 crores by playing proper geopolitics in the world. G20 is one step in that direction. कि जो leadership G20 के देशों हैं, which covers more than 60 to 70% of the GDP of the world,
ये कंट्रीज में जितना भी हम ट्रेड करते हैं, उनसे हम एसोसिएट होते हैं, उनके साथ कैसे हम डील करते हैं, तो उस हमारा जो कारण है कि हमारा जीडीपी कैसे बढ़े, हमारे जो ट्रेड और ट्रांजैक्शंस हो उससे हम कैसे बेहतरीन करें हर देश से, और इसको विश्व में हम लीडरशिप दिखाई जाए। इसलिए G20 का बहुत महत्व रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत पर चल रहे हैं, PLI स्कीम किया है, लोग जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करते हैं, हमारे रियल एस्टेट में वो आवास योजना किया है, 1 करोड़ से ज्यादा घर को सब्सिडी दिए हैं। तो ये सब देखा जाए तो हम ओवरऑल हर क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रोड्स 35 किलोमीटर हर दिन बनाते हैं, हाईवेज को, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स पे हम करते हैं। तो ये सब देखा जाए कि तो हमारा जो रोल रहा है, देश का रोल रहा है, लीडरशिप रहा है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की उन्नति प्रगति कैसे करें और हम इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज कैसे करें। इसलिए हमारी जो G20 में लीडरशिप नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, वो ये सब जियो पॉलिटिक्स को कैसे बैलेंस करके हमारे हिंदुस्तान देश को फायदा हो जाए। इससे ये भी प्रतीत होता है हमारी देश में विदेश में कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। थैंक यू सर। So my next question is, budget is just around the corner. As a vice chairman of National Real Estate Development Council and leading real estate group, what are your expectation and demand from Honorable Finance Minister? देखिए, रियल एस्टेट का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि हम 100 रुपए इसमें डालते हैं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा होता है। आप यही 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 1 होता है, और आप वही 1 रुपया रियल एस्टेट में डालते हैं तो लेबर ओरिएंटेड होने के कारण 100 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और 500 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये इसके कारण जितना भी आप रियल एस्टेट में फोकस करेंगे उसमें ज्यादा उपयोगी है। हमारी 5-6 मेन आइटम्स हैं। एक तो जो है कि हाउसिंग लोन के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 2 लाख रुपया 12 साल पहले किया था। अभी मकानों के भाव भी बढ़ गए हैं और ब्याज भी अभी बढ़ गया है, 6.5 से 8.25% हो गया है। तो हम चाहते हैं कि वो 2 लाख के से लेके उसको 5 लाख किया गया। एक्चुअली फुल डिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप कमर्शियल करते हैं तो 100% डिडक्शन, तो इंडिविजुअल्स को क्यों नहीं 100% दे। लेकिन ठीक है, अभी 2 का 5 लाख पहले हम मांग किया है। दूसरी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमें लोन ज्यादा मिलता है, लोन टू वैल्यू लगभग 90% है, लेकिन उसकी सीमा उन्होंने 45 लाख रुपया कर दी। अभी मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में 45 लाख में कुछ मिलता नहीं, घर तो नहीं मिलता, सही घर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ इसको फिगर बढ़ा दे तो साधारण लोगों को लोन भी ज्यादा मिल सकते हैं और वो घर भी खरीद सकेंगे इस क्षेत्र में। और दूसरी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 1 साल में लगता है, रियल एस्टेट में 3 साल में लगता है। ये तो अन्याय है, आप दोनों को एक ही करिए। और दूसरी बात है कि शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10% कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म का, यहाँ 20% है। तो इसलिए इनको हम नहीं कहते कि शेयर में मत दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में भी उतना ही आप दीजिए, क्योंकि घर खरीदने में लोगों को ये सुविधा देने की आवश्यकता है। तो ऐसे बातें हैं जहां हम सकते हैं। और लास्ट जो बात है रियल एस्टेट में, कि आज की तारीख में हम जो टाउनशिप्स बनाते हैं उनको लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलेंगी और यू विल गेट अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सेम इक्विटी बैक। तो हम चाहते हैं कि जहां हमारे जैसे टाउनशिप हम बनाए 20 साल 30 साल चलते हैं, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे तो वो 15-20 साल के लोन भी मिलेगा और लोन टू वैल्यू इज ऑल्सो डिफरेंट।
सो ये सब चेंजेस की आवश्यकता है और इसकी मांग नरेको ने की है और देखें अभी वित्त मंत्री क्या करते हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज आप अगर बिजनेस लोन में देखें तो बिजनेस को पूरे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है और 100%. सबसे ज्यादा 100% मिल जाता है और सबसे ज्यादा जो लोन पे घर लेते हैं वो सैलरी क्लास है, उसके लिए 2 लाख पे रह जाता है और वो ही सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग है हमारे, उनके लिए बेनिफिट नहीं है। आपने सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग लेने तो एक और पॉइंट आगे मेरे मन में, तो वो मैं जिक्र करूं। इंडिविजुअल को हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है 42%, पार्टनरशिप्स को है 35% और कंपनीज को है 25%। अभी मैं नहीं समझता हूं कि कंपनीज को इंडिविजुअल से कम रेट देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको मत दीजिए, पर इंडिविजुअल को भी तो देना चाहिए ना। तो इंडिविजुअल खुद बिजनेस करे तो उनको 42% मैक्सिमम मार्जिनल रेट है और वही पार्टनरशिप बना दे तो वो 35% भरेंगे और वही बिजनेस में हम लिमिटेड कंपनी बनाए तो 25% और मैन्युफैक्चरिंग नई कंपनी करें तो 15%। तो हम यही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आप ये 35% का 25 आप कर दे इंडिविजुअल होम लोन्स को, इंडिविजुअल लोगों को, तो ये भी एक न्यायदायक होगी। और एक 5 लाख की लिमिट है, उसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करें क्योंकि 5 लाख के ऊपर जैसे 6 लाख पे आते हैं तो 1 लाख पे हमें 30,000 40,000 टैक्स देना पड़ता था, तो डिफरेंशियल इनकम पे 30-40% टैक्स स्लैब आ गया। जी बिल्कुल सर। So my next question is, how CA as a qualification helped you in running your business efficiently, and what advice would you like to give to young CA professional who looks you as a big role model? I think CA is a very, very, very good knowledge base that you can do, and it helps you to understand macroeconomics, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि देश कैसे चलते हैं, फाइनेंसेस कैसे होते हैं, तो एक मैक्रो पिक्चर हमको समझने में आता है। कोई भी परिवर्तन आए देश विदेश में या ट्रांजैक्शंस में, पॉलिसीज में, इकोनॉमिक्स में, तो हम जल्दी से जल्दी उसको पकड़ सकते हैं। दूसरी बात है माइक्रो डिटेलिंग। हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स, उसकी फाइनेंशियल लीवरेजिंग, ये सब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कारण कर सकते हैं। और थर्ड, जो हम टैक्स और वगैरह भरते हैं तो उसको कैसे हम एफिशिएंटली मैनेज करें, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखता है। एक नेगेटिव तो जरूर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंजर्वेटिव बाय नेचर, तो व्हाइल द एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स टू टेक अ लीप इन द डार्क, तो काफी ऐसे हो जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग से मुझे उसको दिमाग में बाजू में रख के हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स में काफी लीप करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में स्पेशली, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हिचकिचाते हैं कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में हम करें कि नहीं करें। तो sometimes it can be a negative, but mostly it's a positive. Great. And my last and important question is, money is not everything, but to say this, you must have enough money in your hand. What are your thoughts on this? जरूर, जिसके पास कुछ नहीं हो उसको कुछ तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो बेयर नेसेसिटीज है ही है, वो किराए के मकान हो, कुछ भी हो, कपड़े हो, कैसे भी हो, खाना हो, वो तो होना ही है। और उसके लिए हमको दौड़-दाम करना पड़ता है, हमको या सर्विस करना है या प्रोफेशन करना है या बिजनेस करना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो एक बार उतना मिल गया, उसके बाद में सरप्लस होता है। वो सरप्लस लग्जरी के लिए है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप एक छोटा मकान ले लो या एंटीला बना दो तो भी लोग खुश नहीं होते, क्योंकि मुकेश अंबानी अभी एक घर लंदन में लिया है, एक न्यूयॉर्क में लिया है और अभी दुबई में लिया है। तो वो तो शांति और खुशी कभी देगी नहीं, किसी को भी नहीं देगी। तो एक हद से ज्यादा लोगों के पास आ जाए तो उनको सेटिस्फैक्शन लेवल और एसेट एक्विजिशन में नहीं मिल सकता। उसके बाद में सेटिस्फैक्शन मिलना है और कुछ करने में। वी डू अ लॉट ऑफ वर्क, जैसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट करते हैं। 14 कॉलेजेस चलाता हूँ, 2 हॉस्पिटल चलाता हूँ, 6 स्कूल चलाता हूँ, स्किल डेवलपमेंट करता हूँ और अभी एक यूनिवर्सिटी भी चलाता हूँ। ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट में है। तो एक खुशी होती है ये सब करने में,
और साथ साथ में बिजनेस भी करता हूँ, लेकिन बिजनेस का अभी महत्व नहीं रहा। ऐसे नहीं है कि मैं ज्यादा नहीं कमाना चाहता हूँ, ये बात गलत होगी, लेकिन उसकी एक महत्व नहीं है। साथ साथ में ये सब के भी बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसलिए आई थिंक वंस यू हैव दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी and minimum shelter and enough for yourself, after that importance of money becomes less and less, and you have to look at other things like purpose in life to give you satisfaction. Social service and all you have to do. Great, very true, sir. Last, thank you so much for giving your precious time and answering all your questions so well. I really enjoyed a lot, and I strongly believe that your interview will inspire many young professionals. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.